So just like always, we're starting with the invocation prayers. We are now restarting this session again after 1 week hiatus from our Mayapur trip. By all of your blessings, we had a very successful, nice, without any obstacles. We finished the Mayapur trip. It was very nice. For me, it was very nice. For others, I don't know. But yeah, for me, it was a very nice. It was nice that I got to visit Mayapur the second time in just a span of 2-3 months, and it's always nice to visit Mayapur. Maybe whoever couldn't make it this time, next time definitely we should go together. This time you should ask whoever went their experience so that you can also think about it, make your aspiration in your head. As we have realized reading the Bhagavad Gita कि जो चीजें हम जिनके बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में एस्पिरेशंस हमारी बनती हैं, और जिस तरफ हमारी एस्पिरेशंस बनती है हमारे एक्शंस, मोटिवेशंस, एनर्जीज उस तरफ चैनलाइज होते हैं. सो you should try talking to people who gone to Mayapur this time, last time, and maybe understand their experience, how it was specifically, not just like हाँ बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, not like that, specifically that what was it, where, what. So all you should talk about it. This is actually what do people do when they get together? They talk, right? People talk about what they saw, what they read in the news. Usually it's what in the news, right? Ki I heard this spot, I heard about this incident, about that. It's mostly about news that you heard. It's mostly about what happened today. आज पता है मेरे हाथ में ना कुकर जल गया, चल गया मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ यहाँ पे ऐसा चल गया, अच्छा ऐसा होता है. फिर then you put this and that. अच्छा नहीं, मेरे all conversations are like this. They just go in all directions, right? But अगर हमारे interactions are with Shastra, are with things that are related to devotion, our talk will be also related to, what I heard about this. I was standing with Chiranshu Prabhu at the airport while coming back from Kolkata, and वहाँ पे बड़ा सा poster लगा हुआ था. It said, become a Dubai, whatever, buy a house in Dubai for just 2 crores or whatever. So some ad was there, right? So Chiranshu Prabhu and I were talking and this and that. Somehow the conversation was led to कि actually हमने भागवतम में पढ़ा था कि the planetary systems below us, there are 7 planetary systems below us, right? उनको बोलते तो hellish planets हैं. क्या बोलते हैं उनको? Hellish planets हैं. But we both start talking how the Bhagavatam, when they describe them, ऐसा नहीं लगता hellish है. बड़े बड़े महल, better opportunities, better facilities, bigger parks, better sense gratification. Almost लग रहा था कि दुबई के बारे में बात हो रही, right? Hellish planets में पढ़ा दी तो थोड़ा दुबई जैसा लग रहा है, क्या ये? So actually what the whole conversation led to was that in the eyes of Krishna and Shastra, opulence or not opulence is not the definition of you're in heaven or hell. How far away are you from Krishna? That is the definition of that. Are you in hell or are you actually getting better, right? And in the hellish planets, you're so absorbed in your big palaces, this, that, and you're so much in the mode of ignorance that there is lesser chance of you cultivating Krishna consciousness. वहां पे शास्त्र है ही नहीं. How unfortunate. That is the definition of a hellish planet, by the way, according to Shastra. That is, ऐसा नहीं कि hells are different. वो जो यमराज वाले हेल सुनते हैं हम कि इसमें आपको पकौड़ा बना के ऐसा आपको जला दिया and all of that, that is there. Don't worry. ऐसा नहीं कि वो नहीं है, अलग है. वो यमराज का स्थान अलग है. That is not part of these 14 planetary system. He has a separate whole island for himself. Huge planet, right? And in the Bhagavatam, only 23 of them are described. And then वो थक जाते हैं शुकदेव गोस्वामी, कहते हैं इसके बाद के तुम बाद में देख लेना. Something like that, 23, 20, something in the 20s they say. कि 23 or 28 को explain करते हैं, and then they like, there are many like these only. Yeah. Hellish plan. So in the eyes of Shastra, hellish, the more you're in the mode of ignorance, the more you're away from Krishna consciousness, your real identity as the soul, that much you're in the hellish planet, right? So we were looking at, is so opulence hell में भी है, heaven में भी है.
right? यहाँ पे भी है. There is opulence here, there is no opulence here also. But that is no parameter if your Krishna conscious is not, right? You can be Krishna conscious even in opulence and even without opulence, right? That is the whole idea. But yeah, my whole idea of bringing this topic was कि when you're reading such thing, वो देख के भी ना वो याद आता है. Those are your conversations. So it's nice to have that conversation amongst each other, that how was Mayapur, and maybe with that the aspiration will come up. So today we'll start our session. This time I was reading our today's verses and I was like, oh my God, Krishna's in a mood today. वो बड़े सच बोलने के मूड में है एक्चुअली भगवान. 7वें चैप्टर से ना भगवान सच बोलने के मूड में है. बिल्कुल अपने आप को हमारे को आईना दिखा रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअल रियलिटी. नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट बता रहे हैं ना. सो ही इज नॉट होल्डिंग बैक एट ऑल. एंड आई वाज लाइक, ओ माय, धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे रियल लाइक अभी प्रेजेंट कॉन्सेप्शंस की, प्रीकंसीव नोशंस की धज्जियां. इज रियली पिकिंग अस आउट, राइट? एंड ही इज गोना टेल अस सम थिंग्स very spectacular today. Hopefully we'll be able to cover it all. So we'll start as usual with our invocation prayers, jo hamare gratitude prayers hain. Mangala Charan on the first page of introduction. Please help each other out to find that page, and then we'll recite it together with the mood and consciousness of what? First, gratitude, that we say thank you to all the different acharyas, to all the different teachers in that line, that because of them we have this knowledge. So first we say thank you, and second we also ask for some strength, that Hari Guru Vaishnav, please give us the strength. Whatever we discuss here, we may apply it for our spiritual progress in the coming weeks and in our lives. So with that mood and consciousness, let's start the invocation prayer. साथ में गाएंगे हम सभी धीरे धीरे गाएंगे. ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. We pay our obeisances and respects to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, because of whom we have been getting access to all of this knowledge. He is the modern Acharya who in the modern times presented the Bhagavad Gita in the most relevant, practical, applicable way. And also, it's not just that he gave us access, he enabled us to apply it in our lives with the platform to convene with devotees. He gave us festivals, he gave us different if you go anywhere in the world,
for example, I only try and have prasadam. So I go anywhere in the world, I don't have to worry at all, because somewhere or the other, I'll bump into a devotee. I have that faith. Somewhere or the other, one day I'd gone with my friends. Actually, earlier on in your life, no, जब आपका जो faith है, आप नए नए डिवोटी होते हो, somehow कृष्णा आप पे थोड़ी ज्यादा कृपा करते हैं, क्योंकि आपका faith और you know खींचने के लिए. After that he says you work now. He leaves you and then now you work. अब तू devotee बन गया है, अब तू काम कर. Then he leaves you for कि अब तू काम कर, अब मैं miracle नहीं दिखाऊंगा. Right? Now you're in. Now you're inside. जैसे वो होता है ना कि कोई नया नया दोस्त होता है, आपके घर में कोई नया नया आया होता है, पहले आप बहुत उसको try and take care of them. जब वो पुराना हो जाता है, अरे अब कितना साल और करेगा भाई. Now you're one of the house member. In fact, you take care of the new ones, right? Just like that, Krishna is like. So in my early days, once I had gone to I think, yeah, I'd gone to Madrid. I'd gone to Spain with my friends. ऐसे घूमने गए थे हम, and वहां पे सारे friends घूम रहे थे, भूख लग रही थी, like खाने का कहाँ, कुछ नहीं ढूंढा हुआ था, nothing, no ठिकाना कहाँ खाना मिलेगा, we just there. अचानक से me and my friends were walking. They're not devotees. My friends are not, जिनके साथ मैं गया था, they're not devotees. So I was just walking with them. Guess what I heard? क्या सुना होगा मैंने? Yeah, ching 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 ching. Randomly, I was walking in Madrid, Spain. Madrid में randomly I was walking. I had no clue. मैंने कुछ सर्च नहीं किया था. चल रहे हैं, अचानक से क्या सुना? Ching 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 ching. What is ching ching ching? The kartal. And they're like, have you seen that movie हेरा फेरी? उसमें सुनील शेट्टी जब भी फोन उठाता है तब क्या आवाज आता है उसको? गोलमाल है भाई सब. Like he somehow hears that song, right? So my friends are, because they couldn't hear it, because I can recognize it, right? For them it was part of traffic, right? So I could hear ching ching. Like I am asking, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या? They're like, तू हमेशा, like every time you do this, like कुछ ना कुछ सुनाई देता है. Like नहीं, I'm like, wait, you're there. So I started following that sound. I just started following it, and we just ran into a Govinda's restaurant. I'm not making this up. We just ran into a Govinda's restaurant. Devotees saw us. They gave us prasad. They gave it to us. Like, oh, you're from India. There's that. They gave it to us. They gave prasad to us. So somehow Krishna just intervenes. But yeah, all of this has been given to us by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is the one who made that happen, right? And for that, we are ever grateful to him with the bottom of my heart. And that's the reason why we sing his glories. We say his pranam mantra. We are also very, very eternally grateful to our spiritual masters, because of whom we are enabled to do this service. So we will say their pranam mantras as well. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine. Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So in this journey of the Gita, where were we? Do you remember? 7 point? 7 point? Right. So second section of this chapter we have completed. Half the chapter we have completed, right? Do you remember अब तक क्या हुआ है 7th chapter में? Yeah. Chapter 1 से chapter 6 तक क्या हुआ है? Problem definition. That happens, there's problem definition, and then Arjun ने problem define किया. उसके बाद second chapter से third chapter. Second chapter was the summary of the Gita. नहीं समझ आया पूरा तो Arjun says पूरा समझाओ. So third से again 6th chapter तक what all he do? He does कर्म कांड से कर्म योग तक लेके आते हैं, फिर कर्म योग से ज्ञान योग तक लेके आते हैं, फिर ज्ञान योग से वापस कर्म योग तक लेके आते हैं, but empowered with ज्ञान योग, right? So that's how he takes it. This is the
third chapter, this is the fourth chapter, this is the fifth chapter, and then after karma and jnana are done, he says there's one more which is called Ashtang Yoga or Dhyana Yoga, and he covers that in chapter number 6. This is how he goes through all the different types of yogas, right? But then at the end of 6th chapter, he says something amazing. He says, yeah, all of these things are there. मैं आपके सामने ये menu रखा है, but इस menu में there's another one which is called Bhakti Yoga, and in my opinion, that is the best. So let me tell you about that. And 7th chapter में he starts with that. 7th से 12th, ये जो 1st से 6th है, इसको बोलते हैं हम कर्म योग का chapter, section, right? Actually, there are 3 sections in the Bhagavad Gita. Karam Yoga, second section is Bhakti Yoga, and the last section is Gyan Yoga. Why is it like this? Because Krishna, in the first section, is trying to tell us how to really live well. How to really live well. Actions, right? Karma means actions. How to actually live well in this world. Is world में भी अच्छे से रहने के लिए, right now we are struggling to live well only. So live well. Max Hospital just came out with Max Estates, and the hashtag is live well. So this is how this Krishna is telling us hashtag live well in the first 6 chapters. See, you live well, right? How do you live well? First of all, materially भी comfortably कैसे रहना है, and then उसको balance out कैसे करना है अपने spiritual duties को करते हुए. This is the first 6 chapters of live. Then he tells us, but just living well will not help you, because living you're doing to find something very important, which is what do you want out of your life. Ultimately speaking, we are all looking for love, happiness, but through love. All that matters is love. We are actually, बचपन से देखा है ना, बचपन में बच्चे बड़े आवरण free होते हैं, covering free होते हैं. What do they really want? What are they really looking for? I saw Champa keep showing me, infant videos. She likes infant and animal videos. So she was showing me animal videos, infant videos, and she was showing me कि actually even animals for that matter. जब हम राहुल प्रभु के घर जाते हैं, he has a dog, he has a pet, and he says कि इसकी तो प्यार करने की जो वो भूख है मिटती नहीं है. लाइक आता है तो अपने सर पे ऐसे ऐसे करवाता रहता है. ही कांट, लाइक वो जाता नहीं है. आप चुप करके बैठ जाओ, अपने सर आपके हाथ के नीचे कर लेगा. Why does he do that? What does he want? Love. What do kids want? Sorry, what do kids? Kinder Joy. Yeah, kids want Kinder Joy. Yeah, so kids want Kinder Joy, but beyond that, if you give them Kinder Joy but take away the mother, what will they want? They'll want the mother. कितने भी Kinder Joy दे दो, कहेंगे कि मुझे अब Kinder Joy नहीं चाहिए, अभी कि मुझे क्या चाहिए? माँ चाहिए अभी. Right now I want my mother only, right? So why do they want that? Because they want a lot of love. They want a lot of love, right? So as we saw a video where a kid did something, everybody started clapping, but the father or the mother intentionally ignored the kid. Intentionally ignored the kid. You know what the kid did? He did उसने देखा कि सबने क्लैप किया मेरे लिए, लेकिन मेरे खुद के पेरेंट ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया. Went and did that same thing again, ताकि आप देखेंगे. नहीं देखा, intentionally कर रहे थे वो, just for the video, right? Intentionally कर रहे थे, करा then start उस जैसे वो होता ना, सामने जाके ऐसे क्लैप कर रहे हैं, ऐसे क्लैप कर रहा है, and जिस moment पेरेंट ने ऐसे क्लैप किया, he got really happy. We are all just looking for that little bit of attention and love, care, attention, love, affection. यही चाहिए हमको. बस वो थोड़ा बड़े होते ना, हमें लगता है कि हमें इतना भी चेप नहीं बनना चाहिए. बचपन में चेप वेप नहीं पता होता हमें. बचपन में मुझे मम्मी ही चाहिए. बट थोड़ा बड़े हो हमें लगता है कि नहीं, मुझे मैं सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ खुद आनी चाहिए. लव मेरे को नहीं जाना चाहिए, चल के मेरे पास क्या आना चाहिए मुझे लव चाहिए. अभी भी मुझे क्या चाहिए? लव चाहिए, लेकिन खुद मेरे पास आना चाहिए. मेरी भी तो कुछ, इसको एक्चुअली सेल्फ से ईगो थोड़ा फॉल्स या कि मैं भी कुछ हूं ना, मैं भी तो मेरा भी तो कुछ नाम है, ऐसे थोड़ी. सो
that comes up in very different ways, right? But all different things that we take up कि मैं मुझे गिटार चाहिए, क्यों मुझे गिटार बजाना क्यों आना चाहिए? 90s kids will in our time गिटार बजाने वाला person मतलब very popular, very cool, right? Very cool. Have you heard that song in I forget the name. नहीं, पापा कहते नहीं, उसके बाद yeah, I forgot the name. Anyway, it was that Imran Khan's first movie. Jaane Tu Ya Jaane Na mein, that whole song is there about, right? Yeah, no, Prabhu, about that Prabhu person, right? Yeah, Prabhu, about Prabhu, that he goes for Italy to do all the like his holidays are in Italy. Rado ki gadi aaton mein, perfume Gucci wala, right? Like all these different things that are there, like guitar bajata hai and all that. All these are what? These are my labels that I'm putting. Why? So that I can get. I saw ad of a perfume or whatever, and beneath that ad, perfume usually kya karta hai? What is the perfume or a deodorant, especially not even a perfume? What is it? What is the function of a deodorant? It's in the name, by the way. What is the function of the deodorant? Odor ko hatana. It is related to smell. But you know the tagline was? The tagline was attention to leke rahega. Some perfume in Kolkata I saw an ad like us perfume ke niche kya leta attention to leke rahega. It is related to taking away the odor. It was all about hygiene. Supposed to be about hygiene, but yahan pe totally different. So we are trying to do things for attention. Why? Because वो जो innate nature है as kids, what do we want? We want love. That same thing, but it has now contorted, has become this whole big huge monster and has taken a very different forms. And because of that, we are really frustrated. So even if I'm living well, what do I need? I need love. Second section of chapter 7 to chapter 12 is about how to find that love. How to find that love? Where will you find that love? By connecting to Krishna. That is the reason why second section jo hai kiska hai? First section is about karma yoga. Second section is about bhakti. Bhakti is about devotion, connecting to God. All these different things was yog matlab connection, connecting with God through actions, connecting with God through jnana or knowledge, connecting through God through dhyana, meditation, right? But bhakti means connecting through God to devotion, to love. That is the second section of 7 to 12 chapter. First section is live well. Second section is how to love well, right? Now that you've gone through this whole 12 chapters of living well and then loving well, what is the need? Then there are some obstacles also. Because अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आ गया, like some people have habits, like some bad habits they develop. You understand what I'm saying? Who here has some bad habit? All of us do some bad habit. Don't name them. I don't want your dirty secrets. But I just want that we are acknowledging. You all have some habit, bad habit, right? अब bad habit आ गई, अब मुझे अक्ल आ गई कि अच्छा ये तो bad habit है, मुझे इससे बाहर निकलना है. लेकिन करूं क्या? ये तो bad habit है. Bad habits die, they die hard, right? They मरने का नाम नहीं लेते हमारे bad habits, right? So the last section is actually about, first was what? Live. Second section was? Third section is to let go. All three are L's, right? Live well, love well, and go. There are some little obstacles in our life जिसको हम बहुत बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से we are not being able to apply the live well and love well के steps in our lives, right? How to let go of them so that you can actually apply the live well and love well philosophy. Is it okay to understand? This is the whole of the Gita, by the way. Hare Krishna. Snap back here. So, मुझे तीनों section बताओ. First 6 chapters are about, second 6 chapters are about, and the third 6 chapters about let go. Right now, which section are we in?
We have just started the love well वाला section, and then उसमें हमने chapter 7 में कितने sections हैं? 4 sections. How do you remember them? Matters of the heart, but start with the H and E we have done, A and D we have to do. H means Krishna says it is all about hearing. If you want to know about the philosophy, the knowledge about the absolute, there is only one way to know. It is not through the experience of your senses. We'll never be able to see God if you think, I want to see God, I want to see God. How will you see God? You can't even see radio waves. Do they exist? They exist, but can you see them? But how do you know they exist? We listen to them, like we have tools that perceive them. Yes or no? They're all around us. Wi-Fi है कि नहीं यहाँ पे? है यहाँ पे. Wi-Fi है, दिख रहा है हमको, लेकिन फोन निकालूंगा तो उसमें जो रिसीवर है उसमें मुझे पता लग जाएगा. Yes or no? क्या? तो वैसे ही मुझे दिखेंगे नहीं भगवान, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल इन नेचर है. कैसे है? सो मेरे को अपना स्पिरिचुअल रिसीवर जो है पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर मेरे को पकड़ में आएंगे भगवान. तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हियरिंग करना पड़ेगा, राइट? From the right authorities. This is the first 3 shlokas. And then he says, E is for everywhere. That he says that anybody who knows the knowledge of the absolute, वो भगवान को कहाँ perceive कर पाएंगे? Everywhere. Because I am everywhere. I am in everything. What are the examples does he give? Anybody remembers? Rasoham apsu kaunteya. So that means that he is in the taste of water. What else? Light of sun, and what else? Ability of man. Amazing. ओमकार. The om जो मंत्रों के सबसे पहले शुरू होता है ओमकार. मैं ही हूं. What else? Sound of ether. What else? That's how he ends it. But उससे पहले he says कि all abilities, everything, all activities, etc. सब कुछ done in a religious way is me. In fact, I am the one, because in this he basically talks about MSC, total knowledge. M is for matter, S is for spirit, and C is for controller of matter and spirit, right? He's like, मैं ही हूं जो एक pearl की necklace की तरह. 7.7 में he says that as a pearl necklace, you can see the pearls. What do you call it? A pearl necklace, right? You can see the pearls. But what is holding it together really? The string inside. Without the string, it is not a pearl necklace. Yes or no? ये तो बिखर जाएगा ना पूरा. Holding it together is who? Shri Krishna. He says, I am the one who's holding it together, but I am the one who's unseen. Then he started to speak about A and D. A stands for accept all, and D stands for demigods, Devi Devta. So this is something that we'll talk about. The question is, he starts talking about his material energy, right? माया के बारे में बताना शुरू करते हैं. 3 modes of material nature के बारे. I love it because ये आज combined class है. 3rd chapter में हम modes of material nature के बारे में बात कर रहे थे, and now where we left off, right now we were talking about modes of material nature, and 7th chapter में भी भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं at this point of time? Modes of material nature. That is what he's talking about. कि modes of material nature. The question is this, that अगर मैं भगवान हर जगह है, तो भाई why can't anybody in this material world see them? Why can't anybody see them? That is the question. That is the question to all of you. Why can't? That's what he starts explaining in A/R. कि कुछ लोग मुझे accept करते हैं, कुछ लोग मुझे क्यों वो बताते हैं भगवान. But my question is to all of you कि अगर भगवान हर जगह है, he says I am all of these things. हम क्यों नहीं उसको perceive कर पाते? Why can't we perceive? Yeah. Right. Right. हमारा पात्र इतना अच्छा नहीं बनेगा जब तक हम वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे ना. Right. तो हमको अपने ऊपर वो करना है कि हम. तो मैं तो अगर मैं भगवान का अंश हूं, तो मैं तो भगवान को परसीव करने के लिए आई एम ऑल्सो स्पिरिट सोल, तो आई एम द परफेक्ट रिसीवर फॉर दैट. खराब क्या हुई है चीज?
I have coverings right now. I have a lot of coverings right now, and all those coverings are governed by the modes of material nature. That is the reason why we're not. Anybody else? Was someone saying something? Yes, bro. Maya, Mahamaya, because external energy, Mahamaya bolte hain, which is three modes of material nature. But in a deeper way, now we're trying to understand. वहाँ पे third chapter में he was trying to introduce it, but now he's going to go full deep into it, right? That how it really affects us. So that is something that we'll discuss in the 13th to 19th. Right now, what we have done 12th, right? अभी 13th से शुरू करना है. Let's start. In the 12th, I'll just read the translation. Know that all states of being, be they goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. ये जो तीन modes of energy, वो भी कौन है? मेरी my energy only. I am in one sense everything, but I am independent. हमने पूरा वो चार्ट देखा था विष्णु एटसेट्रा कि मेरे से रही है लेकिन मैं नहीं हूं. ये सब विष्णु से आ रही हैं एटसेट्रा. These are not. It has come from me, but it is not me. Right? I am not under the material nature. ये बहुत important point है. Sometimes there is confusion. Some people say when God is an energy, when God takes a form, he can take any form. He takes a form of Krishna, then he is just like us. He is just like वो material energy के अंडर है. क्योंकि वो it's like saying, I'll ask you a question, कि जेल में कौन होते हैं? जेल में कौन होते हैं? Prisoners होते हैं. Yes or no? Hare Krishna. Everybody inside the jail is a prisoner. Is that true? जेल से prisoner घूमेंगे तो उनको वहां रखेगा कौन? जेल वहां पे कुछ हाँ नहीं माता जी कह रहे हैं कुछ नॉन गिल्टी भी होंगे. दैट इज ट्रू. हमारे सिस्टम में नॉन गिल्टी भी होंगे, बट भगवान के सिस्टम में नॉन गिल्टी नहीं. उनका परफेक्ट सिस्टम है. तो यहाँ पे जो हम सब हैं, हमको वी डिजर्व टू बी हियर. ओके, वी आस्क्ड फॉर दिस, राइट? वी आर ऑल हियर, बट it's not just the prisoners who are here. The prisoners are the majority, but the minority are who? They are jailers, they are supervisors, they are people who are guards. Yes, is that okay? That is something that we have to remember, that sometimes God also comes here, sometimes God's messengers also come here, but that doesn't mean that when they are here वो भी कर दिए हैं. वो तो बाहर से अंदर आए हैं, उन पे प्रिजन का लॉ अप्लाई. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे मैंने पकड़ लिया तुमको, इधर अंदर पकड़ लिया, अब तुम भी मेरी तरह ये जो पानी वाली दाल है ये खाओ. वो कहेगा मैं जेलर हूं. आई एम इनसाइड डजंट मीन दैट आई एम नाउ बीइंग जेल्ड. नो, आई एम इनसाइड ऑन माय ओन विल, एट माय ओन. मैं अपने खुद से आया और खुद से जाऊंगा. तेरे जैसा नहीं हूं मैं. तो भगवान को दिस इज आवर तो भगवान को कभी कभी बोलता अरे हाँ यू नो देयर इज अ सॉन्ग आल्सो ऑन दैट अगेन. आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, लाइक आई एम जस्ट रिमेंबरिंग सो मेनी सॉन्ग्स. समटाइम्स जब मैं कभी आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर वर्क, तो कैब लेके आता था इन द वी आवर्स इन द मॉर्निंग, एंड वो कैब वाला उसको वी आवर्स वो आवर्स कुछ भी नहीं पता. वो सुबह भी वो ढिक चिक गाने ही चलाएगा. तो सुबह के 4 बजे मैं वापस घर आ रहा हूँ और क्या गाने बजाता था वो, और पूरे दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहता था. And I'm like, oh my God, what has happened? तो there is a song कि वो करे तो कैरेक्टर, वो करे तो ठीक और मैं करूं तो कैरेक्टर. सो मैं और भगवान सेम नहीं है. मैं और भगवान सेम नहीं है. You can't compare yourself. That is the biggest offense that you can do. That is the biggest foolishness that we can do. वो उसने किया ऐसा तो मैं क्यों नहीं कर सकता? You have to follow what he said. You have to follow his instructions, not his actions. You can't follow his actions because he is God. Can you pick up Govardhan Hill on the thumb, on your small finger at the age of 6? Can you do it? Did Krishna go to a gym before
Did Krishna go to gym first कि मैं पहले 5 साल अपने बचपन के मैं जिम जाऊंगा क्योंकि मुझे छठे साल में गोवर्धन करके देख लो. You can't do it, right? He didn't have to become God. He didn't do anything to become God. Krishna never became God. He was always, even before he came into this world, even he was when he was in this world, and even after he left this world. Is it okay to understand? Devaki and Vasudev in their previous janma as Sutapa and Prishni, they had prayed कि please, oh Krishna, they did a lot of penance. Vishnu came in front of them and they said to him, they were devotees, a little humble, right? They didn't ask, demand कि आप मेरे पुत्र बन के आओ, but they have that feeling कि आपको, we want you as our child. I want to have that relationship with you as a mother and father, right? Sweet desire to have, right? You know what? उन्होंने क्या पूछा उनसे? The exact words they asked were कि can we have someone like you as our child? आपके जैसा, like a humble request, right? Yeah, Krishna is like मेरे जैसा, ये तो impossible है. तो मेरे असमा ऊर्ध्व, that is the word that is used. Krishna is asama. Sam matlab, yeah, even the word is similar, right? Same and sama, right? Asama, matlab there is nobody who is same to Krishna and there is nobody who is urdhva. Urdhva matlab unse bada, ना सेम ना उनसे. अब लाइक मी कौन आएगा? नहीं आ सकता, तो मुझे ही आना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई ही केम एज कृष्ण. he came in 3 incarnations to them. 3 बार उनको पुत्र बन के आए. कृष्णी गर्भ, जब सुतपा और कृष्णी बन के, तो उनके गर्भ में कृष्णी गर्भ बन के आए उसी जन्म में. देन उसके अगले जन्म में he came as they came as Devaki and Vasudev and he came as Vasudev Krishna. And then in the next janma we saw, whoever went to Mayapur, we saw in Yogapeeth that they had come. This is the third one nobody has heard, but we have seen that they came as Jagannath Mishra and Sachi Mata, and he came as Chaitanya Mahaprabhu, as Nimai Pandit, as baby Nimai. Three different incarnations, right? So he's saying, I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within. I am above them. तो वो मेरे पे नहीं लागू हो सकते हैं. मैं उन पे हावी हो सकता हूं लेकिन वो मेरे पे लागू नहीं हो सकते हैं. Is this okay to understand? इसलिए शकुनी जैसे लोग ना उनको समझ ही नहीं पाते थे भगवान को. शकुनी जैसे लोग did not want to accept that he is God, but they knew that he was some powerful person. So they kept calling him मायावी मायावी मायावी, mystical. बट इतनी ईर्ष्या है कि ये नहीं मानेंगे कि वो भगवान है. मायावी क्यों बोलते थे? क्योंकि मायावी तो कोई भी बन सकता है. आप, मैं, सब लोग थोड़ा तपस्या ही तो करना पड़ेगा. सो टू कीप हिम इन आवर कैटेगरी ओनली, कि है हमारी कैटेगरी का, बस इसने थोड़ा बहुत क्या कर लिया है, जादू सीख लिया. इज जस्ट लाइक सेइंग कि आर्नल्ड शॉर्शनेगर में और मेरे में क्या डिफरेंस है? बताओ क्या डिफरेंस है? मैं भी टाइम ही तो बिताया जिम में. बस मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं जिम जा नहीं पाया. उसके बहुत टाइम था, उसने क्या किया? बाकी तो वो और मैं सेम ही तो है. क्या डिफरेंस है? वो भी आदमी, मैं भी, और कुछ डिफरेंस है? नहीं है ना. शकुनी सेम, ऐसा ही सोच उसकी ऐसी है. क्या क्या है डिफरेंस इसमें और में? कोई डिफरेंस, बस इसमें क्या है, थोड़ी सी. he could not accept that is Bhagavan, because category different बनाए. when you're envious about someone, no, वो कितना भी great हो, उसको great नहीं मानोगे आप. have you noticed this about envy? yeah, what is that is? in fact उसके जो अच्छा किया उसको भी आप क्या बोलते हो? गलत है, not right, wrong. but he is above the 3 energies. मोह नष्ट हो गया. या मैन्युपुलेट,
Envious. ऐसा नहीं चाहते, इन्होंने सब कराया, सेम He नॉलेज। heard the same. Mataji is saying he's heard the same thing as संजय के मुंह से सारी गीता सुनी है, अर्जुन ने भी सुनी है। अर्जुन का हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, धृतराष्ट्र का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। Why? Because envy is there. And भगवान सुनाना भी नहीं चाहते थे धृतराष्ट्र को जाके। He didn't want to do that. इसको कौन सुनाएगा, बहुत सुनाया इसको मैंने। He never understood. But anyway, 13th श्लोका से हम शुरू करते हैं। All these shlokas are now like gold, such amazing shlokas. I'll try and recite and आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। हिंदी में मत। तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। This is the covering of, heavy covering of the three modes. This is okay to understand? Heavy covering, बहुत heavy covering है material world के अंदर, ठीक है? Three modes का। हम कहाँ पे हैं? इसके नीचे। Is this okay to understand? क्या? कौन ये एक्सेप्ट करता है कि हम 3 मोड्स के नीचे हैं? किसने आज सुबह अलार्म स्नूज किया था? 3 मोड्स के नीचे है। 3 मोड्स के नीचे। आपने तो स्नूज किया था, मैं तो सुना ही नहीं, सोता ही रह गया। 3 मोड्स के नीचे भगवान नीचे रखा हुआ है। भगवान कहाँ है? अभी क्या बोला भगवान ने? वो कहाँ है? इज हियर, ठीक है? So now he is saying what? माता जी हिंदी में अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ें। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है, जो रूपन है। नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन। सत्य और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। He says कि ये everywhere वाला part है, that I am everywhere but nobody perceives me. Why? This is the answer. कि because everybody is under the 3 modes, and where am I? Above the 3 modes. So if you're below the 3 modes, you'll never be able to know someone who's above the 3 modes. That simple as that. As simple as that. If I'm under the 3 modes, I cannot know something or somebody or all these different attributes जो 3 modes के above है। So ये क्या बताता है कि अगर हम 3 modes के नीचे हैं तो मुझे ट्रांसेंडेंटल कुछ भी नहीं समझ, भगवान तो छोड़ो, मुझे ट्रांसेंडेंटल कुछ भी नहीं समझ आएगा। How important does this make for us to engineer our lifestyle so much in a better way? People ask, spirituality is all about the spirit. It's an internal process. ये तो अंदर की बात है ना। तो ये हम बाहर की चीजों को मेरे को कंट्रोल क्यों कर रहे हो आप? मैं क्या खाता हूं, मैं कितने बजे उठता हूं, मैं कहाँ जाता हूं, मैं क्या बातें करता हूं, मैं क्या देखता हूं, ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं। भगवान का तो कनेक्शन मेरा अंदर से है। People say this or not? Have we also said this? We have also said this, right? Because why? ये सोचने की बात है। Because मुझे ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए। मुझे कमिटमेंट किसी का नहीं देना है। अच्छी बातें करा लो, फॉरवर्ड्स करवा लो, व्हाट्सएप पे I'll be like full crazy, spiritualist, बट मुझे कमिटमेंट नहीं करनी है किसी चीज की। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। I wish it was like that. I make commitments every day. I break them every day. At night I say, kal फिर से, कल पक्का। For a long period of time, this was in college, I knew everything. I had read all Prabhupada books. I had given classes. I'd done everything.
but I was not chanting. I had given up Paningala, everything, but I was not chanting. I didn't have association. I was in my I was in the Netherlands. I was alone. There was a temple there which I used to go every Sunday, but not many people, not like-minded association जो होता है ना, जिससे मैं actually chill कर सकता हूँ, जिसके साथ बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, वो नहीं था मेरे पास. I know this is an excuse that I'm giving, but I'm just giving you a context. And मैं अपनी माला लेके गया था. मेरे रूम में जो प्रभुपाद बॉक्स था वो पूरे टाइम 24/7 बजता था. मैं सोता था. उसने मुझे एक्चुअली प्रोटेक्ट इन दैट बबल दैट आई हैड मेड इन माय whole room. I had an altar. I used to cook the food. I used to offer. I used to do everything. But I never used to. मैं chanting नहीं करता था. तो मेरे को हर दिन सोने से पहले मेरे टेबल पे मेरी chanting माला दिखती थी. I had only one room, one kitchenette and one big studio. And उसी स्टूडियो में मुझे सोते हुए हर दिन मुझे अपने क्या दिखती थी, अपनी चांटिंग बैग दिखती थी. एंड इट वाज हेवी ऑन माय कॉन्शियस, हेवी ऑन माय कॉन्शियस. हर दिन मैं उसको देखता था और मैं क्या बोलता था, आज नहीं कर पाया, कल करूंगा. इट गैदर्ड डस्ट एंड द मोर इट गैदर्ड डस्ट द मोर हेवी आई गॉट, राइट. बट दैट एवरीडे मेडिटेशन हेल्प्ड मी ऑन द माला कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. एंड देन somehow picked it up, right? But ये जो कमिटमेंट हमें करनी है, ये करनी चाहिए. We have to commit, right? We can't not commit, and this is the reason why. हमारा लाइफस्टाइल हमें हमारे डिटरमिन करता है कि मैं कौन से मूड में हूं. हमें 3 मोड्स है. कौन से यू नो देम? तम, रज एंड देन ignorance, passion and goodness, right? So in he's saying all 3, by the way. We have a huge trend now, sattvic food, sattvic movement, and being sattvic. It's a very good thing, but that is not the goal. That is not the goal. We have to because अभी कहाँ है हम? अभी मोस्टली रज में है या तमस में. सात्विक हमारा बहुत minimal, by chance sometimes, right? But mostly tamas or rajas. We have to rise up to at least what? Sattva. Why? Because that is the launch pad from which I can, it is nearer to outside. No, अगर ये transcendence है तो it is nearer to यहां से हम transcend करना easy है हमारे. यहां से transcend सीधा करना बहुत. The word says ignorance. वहां पे तो पता ही नहीं, रियलिटी के बारे में ही नहीं पता हमको, पता ही नहीं है, राइट. यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे पता नहीं है, और यहाँ पे टाइम नहीं है. यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रह सकते. यहाँ पे आके इमीडिएटली हमें क्या कर जाना है, आगे निकल जाना है. क्यों? यहाँ का क्या पिटफॉल है? व्हाट इज रॉन्ग विद बीइंग इन सत्वा? व्हाट इज द पिटफॉल ऑफ सत्वा? या tamas का pitfall क्या है? Anybody quickly? What is the pitfall of being in tamas? Yeah, unreal. I want to live in not in the real world. I don't want to accept reality at all. Denial. I'm in total. I'm living life as if there is no death, as if there is no tomorrow, as if there is no consequence. In fact, I hate my life. I want to always stay in my unreal dream world. I have pumped up my ego, false ego so badly. मैं अपना false ego इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि मैं अपना इमेज मैंने बहुत कुछ और ही बना लिया है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं. मेरे इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरकेशंस होते हैं विद पीपल. मेरे खुद के फ्रस्ट्रेशन ज्यादा, क्योंकि मेरी जो इमेज अपनी जो बनाई हुई है, हर दिन वो मिसमैच होती है बाहर के रियल वर्ल्ड से. तो मुझे क्या फील होगा? फ्रस्ट्रेशन फील होगा ना. यस और नो? मैं सोच रहा हूं मैं बहुत बहुत बड़ा हीरो हूं, ठीक है, और बाहर जाके दुनिया मेरे को हर दिन दिखा रही है मेरी औकात, एवरी डे. एंड आई कम बैक होम, आई एम थिंकिंग मेरा ईगो और बढ़ गया कि ऐसा. हाँ, सभी लोग क्या है, एंड माई हैबिट्स आर ऑल्सो लाइक दैट, दैट आई वांट टू गो इनटू द अनरियल वर्ल्ड. व्हाट टेक्स अस अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इनटू द अनरियल वर्ल्ड? एनीथिंग, सब्सटेंस, intoxication, right? Yes or no?
I'm just talking about reality right now. Does it take us to an unreal world? Yes or no? Social media, over reliance on social media because I don't want to live my real world. Sleeping because I like my dream world better than my. When someone is depressed, what do they want to do? Sleep more. Yes or no? Why? Because they want to run away from their real situation because it's not nice for them at that moment. Is it okay to understand? So ignorance से ट्रांसेंडेंस में आना तो बहुत ही मुश्किल है. मतलब आप रियल वर्ल्ड तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो, ट्रांसेंडेंस की क्या बात करेंगे? Yes or no? Hare Krishna. Rajas is when everything is just too quick for you. I want this also, I want that also, this, that. It's too quick. There is too much going on in life, right? My ambitions are too high. I just want too many things right now. Thoughts are very quick, very turbulent thoughts. So now I'm a little higher than this क्योंकि अब मैं real world में आ गया हूं. अब मैं real world में उसी में जीने की कोशिश कर रहा हूं, उसी में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूं. बट उसमें सर्वाइव बिना मैं विदाउट एनी रियल नॉलेज आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव. आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन अ वर्ल्ड इन which is designed to kick back only. So it's a long struggle. And here someone says ki, listen to me, there is something beyond. You're like, I agree with you. I agree with you. But let that world be there. My world is here. I want to do this. I don't have time. I don't have time. That is Rajas. In Sattva Gun, that ये दो pitfall बता दिए. Sattva Gun में सब कुछ clear हो जाता है. It's easier to understand transcendence, all of that. What is the pitfall of Sattva? वापस नीचे क्यों आएंगे? हम तो सत्व में आ गए, नीचे क्यों आएंगे? That is number one. कि ये world is designed to pull us down. That is one, right? Second चीज, सत्व का inherent pitfall क्या है? ये तो वर्ल्ड का पिटफॉल हुआ. सत्व में रहने का पिटफॉल क्या है? सत्व में क्या आता है हमें? आई एम बेटर देन अदर्स. ये जो तमस, अब मैं इससे निकल के आ गया ना, तमस और रजस से निकल के आ गया. Actually, even in Sattva, ego only goes when you're in transcendence. Ego is still there. That's why he says, Krishna says, you're under the 3 modes, not 2 modes. How many modes? Ego is the last thing to go. Ego is the last layer. Remember that. It is the most subtler. Five material, then mind, then intelligent, then yeah. हाँ, exactly. मैं बेटर हूं. यहाँ पे ना आप ज्ञानी बनते हो, ज्ञानी. कोट शास्त्र भगवत गीता ही कर रहे होगे आप. सत्व गुण में आके आप कोट किसको कर रहे होगे? भगवत गीता ही कर रहे होगे. बट कैसे कर रहे होगे तुझे नहीं पता. I'll tell you. हाँ, I'll tell you. It has nothing to do with God. भगवान से मेरा प्रेममयी रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं भगवत गीता नहीं यूज कर रहा हूँ. I now know the world. I now know M and I now know S. But I don't still know. I now know about matter. I now know about spirit also. But I do not know about controller. That दोनों का controller कौन है? वो जो जानता है वो कौन वहां कहां जाएगा? तो यहां एक बार ईगो स्ट्राइक्स, फिर आपको कहां जाओगे? नीचे ही जाओगे. तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहेगा हमारा. यस प्रभु. प्रभु, knowledge means realization. Information and knowledge is very different. Correct. Knowledge ka definition is very different for Krishna's standard. We had discussed it a long time ago. Knowledge is realized action. That is the definition of knowledge according to Krishna. Knowledge means realized action. I have to act on it. Information है, हाँ भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, मेरा क्या लेना देना उनसे. Action, realized action. Now I know that Krishna is like this. How can I connect with him? Then information is by chanting. Am I chanting or not? I know chanting I have to do.
I have realized it, and am I acting on it? That is actual knowledge. इसीलिए आई एम सेइंग दैट बीइंग अंडर दीज थ्री मोड्स योर लाइफस्टाइल हैज टू चेंज. इसीलिए खाने पीने की इतनी बात होती है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या पीना चाहिए. इसीलिए आपके रहन सहन की बात होती है. इसीलिए उठने सोने की टाइम की बात होती है. बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द वंस हु आर एक्चुअली पुटिंग अस इनटू तमस, रजस एंड we can't say that I will be spiritual but I will do my side business also. I will not change my lifestyle, but I expect my heart transformation to happen. That is not going to happen. That's just information. That just we have just made like a elite club where we just sit and try and understand कि हाँ भगवद गीता ऐसा होता है, भगवद गीता वैसा होता है. But किया क्या भैया? What did you do about it? What did you do about it? Realized action is where all the game is. Whoever is acting on it, yes, Prabhu. Suffering can also be the arrogance, but that arrogance can lead us to be complacent, not to move on. Complacent. ये ठीक है. सत्व पे आ गए, अब अच्छा लग रहा है. This is very nice. अच्छा लग रहा है ये. You understand what I'm saying? Rajas and tamas is not disturbing me. Rajas and tamas में very disturbed. सत्व में we're not disturbed. In fact, शांति almost आ गई है मेरे पास. Shanti is almost there. Peace is at sattva. We are peaceful. Almost, right? Yes, Prabhu. Yeah, there are devatas. Devatas, they're actually in tamas, rajas, and sattva also. They're devatas who are tamasic, rajasic, and sattvic also. So how are they higher than human beings? Because our world, जो बीच वाला world है, इस world में हम सत्व, रजस और तमस इन तीनों का मिलावट मिश्रण इक्वल है. नीचे तमस ज्यादा है, ऊपर सात्विक गुण ज्यादा है, रेशियो ज्यादा है, बट टोटलिटी नहीं है, मिश्रण है. स्टिल देयर इज अ मिक्सचर. इनफैक्ट ऑन द टॉप हु इज सिटिंग? Brahma ji is sitting. He has access to the max amount of sattva at his level. In fact, Janalok, Tapalok also. That's why they, even when the partial pralay happens, they don't go down. वहां प्रलय नहीं आता, जो पार्शियल प्रलय आता वहां नहीं जाता, बिकॉज वहां के लोग ऑलमोस्ट सात्विक में है. डोंट डिस्टर्ब देम, इट्स ओके. बट जो देवता लोग हैं वो कहाँ पे हैं? हमसे सिर्फ 2 लेवल ऊपर. इनफैक्ट Rajas is still there, tamas is still there, desires are still there, but they have more access to sat. That's all. होते हैं. इंद्र का एग्जाम्पल हम बहुत बार लेते हैं. इंद्रदेव तो ही इज ऑलवेज लुकिंग आउट. मेरा गद्दी तो नहीं छीनेगा, गद्दी तो नहीं छीन लेगा, यू नो, ऑलवेज लाइक दैट. वी गिव हिम दैट. एक्चुअली ही इज अ डिवोटी. जो सारे देवता लोग हैं वो डिवोटी हैं, भगवान एक्सेस में उनके, बट दे आर नॉट प्योर डिवोटीज. दैट्स द ओनली थिंग. प्योर नहीं. देयर आर सम डिजायर्स हियर. दैट्स व्हाई देवता लोग बने. यस प्रभु. I don't know. I correctly said I am spiritual, but business side business. कि मुझे स्पिरिचुअलिटी करनी है, साइड बिजनेस मतलब मैं जो अपना लाइफस्टाइल which does not align with spirituality, which is not prescribed by Sri Krishna, which is not prescribed according to the principles of bhakti yoga, right? मैं वो नहीं फॉलो करूंगा, लेकिन मुझे भक्ति करनी है. And as Prabhuji very succinctly put it, 16 rounds, 4 regulative principles. This is the ideal. In fact, not the ideal. This is the minimum. This is the basic. This is the do's. We have a couple of doctors in the room. When someone is ill, in the prescription, there is some do's and there is some कुछ परहेज और कुछ दवाई, औषधि. Is this okay to understand? The do's, what they do, जो औषधि है वो क्या करती है? ठीक करती है. बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? परहेज करना पड़ेगा. अगर मुझे खांसी हो रही है, मुझे कोल्ड है और मैं दबादब आइसक्रीम खाए जा रहा हूं,
राइट? जितनी भी दवाई लूं मेरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। मैं परहेज करूंगा तो जहां है वहां पे पहले मेरी इन्फेक्शन रुकेगी, थमेगी। इज ओके टू अंडरस्टैंड? एंड व्हेन आई देन पुट औषधि, जो थमी हुई है उसको हम ठीक होगी। जस्ट लाइक दैट द डूज आर दैट आई हैव टू चांट, chanting, hearing, reading, but principally chanting. And the don'ts, which actually are putting me into a lot of material trouble, जो मेरा भावरोग बढ़ा रही है। भावरोग मतलब जो मटीरियलिस्टिक थ्री मोड्स वाला मुझे थ्री मोड्स में डुबा रही है, वो है ये मेरे जो थ्री डोंट्स। एंड वी आर रीडिंग दिस इन द श्रीमद् भागवतम इन द मॉर्निंग्स। रेडियो भागवत में इसी में पहुंचे हम अभी, कि कैसे परीक्षित महाराज कली से बात करते हुए पूछते हैं जब, तभी सेज धर्म क्या कहता है? धर्म के चार पैर होते। कितने पैर? what are those? Anybody remembers? उसका तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के धर्म के पैर कैसे होगा? तो सबसे पहला ही धर्म है। धर्म के चार पैर कैसे हैं? सत्य, दया, शौच एंड नॉट दान, तप। सत्य means, daya means, shauch means cleanliness, and then tap means, these are the four pillars of dharma. In Satya Yuga, when the cycle starts, ये चारों के चारों पैर धर्म के काबिल कायम होते हैं, right? But as time passes on, त्रेता युग में तीन पैर बचते हैं, द्वापर में दो और कली में सिर्फ कौन सा एक? ट्रूथफुलनेस, सत्य बचता है। प्रभु, you're a lawyer, tell me, सत्य बचा है बाहर? नहीं बचा। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि सत्य बचा है? अभी तो 5000 साल ही हुए हैं कली के। सत्य, this is the question I genuinely had. I asked this and then they told me actually सत्य is not हमारा सत्य, हम जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं। जब कोई मरता है तब क्या बोलते हैं? वो सत्य अभी भी बाकी है। शास्त्र is still there, शास्त्र is still accessible, but as कली progresses, शास्त्र भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। Can you believe it? शास्त्र ही खत्म हो जाएगा, भक्ति करेंगे कहां से? बताएगा कौन? That is how Kali is going to go. Dharma fully will be gone because there is no शास्त्र ही नहीं बचेगा, right? But right now शास्त्र बचा है, इसलिए हम कह रहे हैं सत्य अभी भी बाकी है, सत्य अभी भी बाकी है। But what was I? Why did I come to this point? हाँ, don'ts। तो चार जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के ऊपर बेस्ड हमारे चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। सत्य कैसे बचता है? नो गैम्बलिंग, दैट इज वन प्रिंसिपल। नो गैम्बलिंग मीन्स नो इजी मनी मेकिंग, नो स्कैमिंग, बट उसका representative is gambling. Is this okay to understand? Deceit, to deceive someone, truthfulness goes away from you. Second is daya, compassion. No meat eating, but no meat eating basically doesn't mean just becoming a vegetarian. The reality of it is having only and only prasad, offered food. That is what is going to bring compassion, daya in me, or protect compassion in me, right? Second. Third is शौच, no illicit relationships. शौच मतलब cleanliness. When you have illicit relationship, you get diseases in your body. Very, this is a common known factor. But otherwise also, मन की मैल भी किससे आती है? खराब सोच से। Yes or no? So that is the reason why that is represented by illicit relationships, not just physically. Even if you don't go through with it, what if it is there in your mind? Maybe you're not going through with it कि लोग क्या बोलेंगे, but मन में तो है ना? No illicit relationships. And the last one is tapa, austerity, the ability to do something which is right, correct yourself, to correct yourself, going through some austerities, right? उसको क्या ब्रेक करता है? अगर मुझे मेरी एडिक्शंस ब्रेक करती है, मैं छोटे एडिक्शन से बात करूं क्या? छोटे एडिक्शन से, छोटा एडिक्शन है कि मुझे एसी का एडिक्शन है। अगर मुझे एसी का, मैं किसी भी धाम नहीं जा पाऊंगा,
धाम नहीं जा पाऊंगा। क्यों? यूजुअली धाम जाना क्या है? ऑल दीज धाम्स, मोस्ट ऑफ देम, मेनी ऑफ देम आर नॉट, बट मोस्ट ऑफ देम आर कहाँ पे? कोई बस लेनी पड़ती है, कोई टोटो लेना पड़ता है, कोई बोट लेनी पड़ती है, तपते धूप में, भीड़ में, ठंड में, ना हीटर ना एसी, नॉन एसी बस भी लेनी पड़ती है। माता जी इज टॉकिंग अबाउट द recent, but Mataji, tell me something. These are all are our inherent barriers, right? But ये barrier अगर मैं, they become so big for me that I will not even go to the other side. Tell me, will you be able to experience what you experienced? Just because AC नहीं है, अगर मैं धाम ही ना जाऊं, जो धाम गया, हाँ हम वहां पे तपे हैं थोड़ा, इसलिए तो उसका नाम क्या है? तप है ना, तप नाम है उसका। तप मतलब इजी नहीं, तप मतलब थोड़ा तपेंगे, थोड़ा जलेंगे, होगा कुछ, बट उससे मेरा हार्ट क्या होगा? हार्ट पिघलेगा। बोले प्रभु, डिड यू स्वेट दैट? ऑफ कोर्स वी स्वेट दैट, बट डिड यू फील गुड दैट? बट इफ द बैरियर इटसेल्फ हमारे इतना बड़ा बन जाए, तो हम उसके आगे जाएंगे ही नहीं। थोड़ा डिस्कंफर्ट इज गुड, बॉडीली डिस्कंफर्ट थोड़ा सा इज गुड। और इसको रिप्रेजेंट क्या करता है? तप को हमारी एबिलिटी टू डू ऑस्टेरिटी। यू नो हु स्टॉप्स अस? आवर एडिक्शंस, बिगेस्ट एडिक्शंस इन दिस वर्ल्ड आर इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेशन। दैट इज व्हाट स्टॉप्स अस। विल एंड ये चारों अगर हम करते रहेंगे तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ट्रांसेंडेंस समझ ही नहीं आएगा। अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा मेरा, बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड? अब्बा डब्बा जब्बा, या सो कुछ नहीं समझ आएगा मुझे। आई विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। I will not be able to. Yes, Prabhu. I'll tell her later. I'll show her later. This is the reason why when we don't give up these habits. They have somebody in the bad habit. Yeah. Actually, the secret is if you do the do's, no, the don'ts already automatically. You like the do's so much. They're like, this is stopping me, yaar. This is stopping me. If I like playing football, having a, I go to play football sometimes on the weekends. So some of the people who come there, they're my age. So I see the group पे message होते हैं कि तो कहते हैं कल गेम है कि नहीं बता भाई, मैं उसके हिसाब से उसके ऊपर डिसाइड करूंगा कि रात को पीना है कि नहीं पीना है। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज रियल मैसेज, आई विल शो इट यू। कि रात को मैंने दारू पीनी है नहीं पीनी है, ये किस पे डिसाइड होता है? कल सुबह मेरे को गेम खेला है। दैट मीन्स व्हाट? उसके दिमाग में प्रायोरिटी है कि उसको क्या बेटर, क्या पसंद है? गेम पसंद। गेम पसंद है, इसलिए वो क्या छोड़ सकता है? छोड़ सकता है। कैन यू इमेजिन दिस स्मॉल थिंग? और ये अब ये तो बहुत बड़ी चीज है। जो आनंद ये देगा मुझे, उसके लिए मैं ऑटोमेटिकली लाइक छोड़ सकता हूं यार, मैं ये, इससे बड़ी चीज मिल रही है। व्हेन आई गेट, व्हाई एम आई अल्टीमेटली स्पीकिंग, मे बी दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट आई विल मेक टुडे। अल्टीमेटली स्पीकिंग, हमने स्टार्ट कैसे किए थे कॉन्वर्सेशन? व्हाट डू वी वांट? अल्टीमेटली व्हाट डू आई वांट? लव एंड हैप्पीनेस। आई वांट दिस, नो? अगर मुझे वो कहीं से मिल रहा है ना माता जी, ये जो सारी, why do I take intoxication? People like it. Does it taste good? It does. I've heard it doesn't taste good. I've fortunately never tasted it in my life, but I can say that very proudly. But I've heard प्रभु मैंने हियरिंग करी है उसके बारे में, हियरिंग करी है मैंने। If I say it is a comfort, Yeah. like sitting here for last 1 hour, Yes. Yeah. also sit on the roof. Yeah. After half an hour, I should start looking At the watch. become normal. Yeah. 100%. But what I'm saying is, put the bad in, I'm going for the comfort. No problem at all. So you're like addiction, that Yeah. is like
tough and like this, you are going, you don't get tasty bus. You Yeah. don't feel comfort, and I know how you will do your chanting and bhakti Yeah. from Dil Se. 100%. I agree, Prabhu. In fact, Srila Prabhupada agrees with it. When he made the ISKCON temple in Vrindavan that we see, आज हम जो ISKCON temple देखते हैं, you know, पैसा पाई पाई जोड़ के वो temple बनाया उन्होंने. You know what the priority was for him? He didn't make the altar first. He didn't make the temple building first. भगवान के लिए बन रहा था वो temple. He didn't make that first. You know what he made? Not prasadam. You know what he made first? He made the guest house first. He made the guest house first कि यो जो devotees हैं यहाँ पे, इनको मैं क्या दूंगा? Comfort दूंगा, ताकि वो comfortably क्या कर पाए? भक्ति कर पाए. That is why he did that. He agrees with that, Prabhu. He agrees with that. Comfort is very important. We should give ourselves comfort, but I should not become dependent on it. That's my only thing. And उसमें भी dependent भी हो गए, ठीक है, कुछ basic comforts है मेरे, उसको मैं मानता हूँ 100%. But उसका जो highest representative है, जैसे कि intoxicants हो गए, that is what I'm talking about. मैंने छोटे का example लिया बड़े को दिखाने के लिए. जो हमारे डोंट्स है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में, उसमें एसी तो है ही नहीं. उसमें तो एसी है नहीं. वो किसमें क्या है? इंटॉक्सिकेंट्स है. दारू है, स्मोकिंग है, गांजा है, एलएसडी है, चाय कॉफी है, ऑल ऑफ दिस है. सबके नाम पता है, मैं रह चुका हूं. मैंने तो, मैं आपको, I might have not taken them ever, but I have had encounters for sure. फोन है प्रभु हमारा एडिक्शन, राइट? बट दैट इज नॉट देयर इन द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट अ representative नहीं है. इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग, बट भागवतम चेंज नहीं करेंगे हम. या करेक्ट. See, manifestations keep changing. In fact, if I leave my intoxicants, I am empowered to leave my phone. Because I have left, I am following a regulative principles. भगवान मुझे empower करेंगे कि मैं ये छोटे जो मेरे addictions है उसको मैं छोड़ पाऊं. Like in Mayapur, this is such a good example what Prabhuji is saying. When we were in Mayapur, we did not use our phone, not because I had to stop myself. I did not feel like picking my phone up. Can you believe that? We were there for 5 full days. फोटो खींचने के लिए भी बोलना पड़ता था, प्रभु जी फोटो खींच लो. हाँ, या मैं भी खुद ऐसे, मेरा फोन अभी ऑफ पड़ा है प्रभु, उसको मैं ऑन करूंगा और मैं अपने नोटिफिकेशन चेक करूंगा. That's our nature. That's our nature, right? We can curb it, but some things do, और some कुछ चीजें हमें naturally आती हैं और कुछ चीजें कर्ब करनी पड़ती है. But the point is कि ये जो 4 प्रिंसिपल है, ये representative है सबसे. ये ऐसे लगता है उस चीज के राजा है. राजा को आप मान लोगे तो बाकी जो छोटी चीजें ग्रेजुअली आपकी क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी. बट ये राजा है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट? इस ये करेंगे तो हम 3 मोड से ऊपर पहुंच के भगवान को समझ पाएंगे. I'm going to stop here and I'm going to take any questions at the end. But he sing बहुत जबरदस्त चीजें बोलेंगे इसके बाद भगवान, बहुत ही जबरदस्त. Yes. Yeah, that's actually the next 2 shlokas. Yeah, I wanted to go there today. In fact, I wanted to cover 13 to 19. क्या ambition लेके आता हूँ मैं? 13 किया है मैंने आज. Yes. Yeah. So the 3 modes are like the coverings, which are basically ignorance and impurity. Yes. Just that we cannot really see the absolute truth. Right. It's like a cloud and the sun, and we cannot see it. Yeah. When Hanuman Jayanti just went by, it was a very interesting linkage of pure devotee, Hanuman being a pure devotee, being able to cross the 3 modes as a metaphorical way by crossing the ocean. Right. And first thing he crosses is actually Sattva. Right. The mountain Right. that it was. And it invites Hanuman to sort of settle down. Rest a little. Yeah.
very nice. वो जो correlation. क्रॉस करते हुए उनके पास राक्षस आते हैं एक्चुअली, दोज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ these modes. Yeah, that's very nice, Prabhu. Yes, I think it's all linking very well with this. Yeah. This and the regulations. Yeah. The whole idea of today's session was that we really have to commit. I can't just say ki I want to do spirituality, I want to be spiritual, I'll only cherry pick what I like. Spirituality is not about what I like. True spirituality is about what Krishna likes. I have to align my likes with his like. That is real spirituality, and that is when I actually feel happy. Sometimes I feel कि ऐसे कैसे आए, मेरी भी likes का कुछ होना चाहिए, ऐसा भगवान का क्यों चलेगा, मेरा ही कुछ भी तो मेरा. But actually भगवान का चलाएंगे ना तो हमें ही खुशी मिलेगी. हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान का चलाएंगे तो खुशी, हम अपने अपनी लाइफ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, इज माई थॉट. पर अगर हम भगवान का करेंगे ना तो खुशी किसको मिलेगी, मुझे ही मिलेगी. आई एम ओनली गोइंग टू बी हैप्पी बिकॉज भगवान को मैं खुश कर रहा हूं. आई एम मेकिंग द सोर्स ऑफ एवरीवन हैप्पी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल गेट हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली. ही इज द रूट ऑफ माई ट्री. If I pour water into the root, who will get nourished? If the leaf starts rebelling and saying कि रूट में पानी मत डालो, हमेशा हमेशा आप कहां डालते रहते हो, रूट में पानी डालते हो, मेरे पे डालो पानी. आज से सिर्फ पानी किस पे पड़ेगा, लीव्स पे पड़ेगा. रूट पे पानी, कौन मुरझेगा, पत्ता ही मुरझेगा. बट दिस इज व्हाट माय होल आइडिया इज कि मेरे पे डालो, मेरे पे डालो. नहीं, इफ आई एक्चुअली प्लीज कृष्णा, who will get nourished? I will only get nourished. Is it okay to understand? Yes, Matsu. Yeah, आज कल ऐसे करते हैं हम. But originally speaking, yeah, the doctor knows. We should trust the doctor that prescribed. Yeah. Actually, you first have to admit that we don't know anything. जब तक मुझे ये एडमिशन नहीं होगा कि आई डोंट नो एनीथिंग, नहीं होगा. आई डोंट नो एनीथिंग जब तक मेरा ये पोजीशन नहीं आएगा, बिकॉज द वर्ल्ड हैज नाउ ट्रेन्ड अस टू नो कि नहीं मेरे को बहुत पता है, मैं तोप आदमी हूँ. आई एम अ बिग पर्सन, आई नो एवरीथिंग. दैट्स हाउ वी बीन ट्रेन्ड, वी बीन ट्रेन्ड लाइक दैट. बट ठीक है, दुनिया में वी कैन स्टिल रोम अराउंड लाइक दैट, बट एटलीस्ट इन द मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमें ये पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता है, भगवान को पता है, भगवान बता रहे, मैं करके तो देखूं. आई विल चैलेंज, आई विल गिव अ चैलेंज. ओके, यू डू दिस. एक महीने, आई एम नॉट सेइंग लाइफ बदल जा दो, आई एम सेइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और ये 16 माला का जो जप है, आप 1 महीने के लिए करके देखो ना. 1 महीने के लिए कर सकते हो. अगर जो नहीं कर सकता है, आप खुद ही सोचिए, सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि हम कितने 3 मोड्स के अंडर है कि मैं 1 महीने का चैलेंज भी नहीं ले सकता, ट्राई भी नहीं कर सकता इसको. How imprisoned I am. If you really want to experience it, take a challenge up. No, do this for a month. Sincerely do this for a month. If you see the results, take it up. If you don't see the results, don't take it up. This is science. This is not blind faith. Science is you have the process, you have the hypothesis, test it out by experimenting it and take out the inference. Isn't that science? This is science. This is science. Try, but you have to agree to at least do it. I can't do 10% and say, nahi, I didn't get 100% result. If you did 10%, then how will you get 100% result? Are you doing your 100%? That is the question to ask. If you want facilitation to do 100%, then please, that's my job to do. I will try and facilitate it for you. We have a whole Sangha here for doing that. We do morning chanting. We have these classes every week. We have every morning Bhagavatam. We have every morning Bhagavatam weekdays pe at 8 to 8:40. We have Nectar of Instruction class online. If you want, you can't do offline. You have online class. We have everything actually. Thank you. We have everything actually. We have weekday, weekend, offline, online, morning, evening, everything. You have to choose if you want to come or not. Whoever wants the menu, please let me know. I'll send you. कि ये सब है,
आप जहां आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप करने को मिलेगा. But try it for a month. You yourself will feel the difference. But this is the need of the hour. We just saw heinous things happen in Pahalgam. Disgusting. What should be done? Justice should be, we need justice, but that's not going to stop heinous acts from happening. Justice should be made externally. बाहर के हमारे जो actions है, पकड़ना, मारना, सब कुछ करना है हमें, प्रोटेस्ट करना, सब करना है. लेकिन जब तक हम लोगों की कॉन्शियसनेस अपने से शुरू करके लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं बदलते, कुछ नहीं चेंज होने वाला. It will keep happening again and again, some form or the other. पहले क्रिश्चियंस मारते थे, हिंदूज मारते थे, अब मुसलमान मार रहे हैं. नाम ही तो चेंज हो रहा है. Crusades, this, that. Humans have killed humans in the name of many things in history of the world. Only names have changed, actions have remained the same. So we can't say कि नहीं यही गलत है. No. गलत क्या है कि लोग ठीक नहीं है, लोग ठीक करना है, और लोगों में से मैं आता हूं. मैं अपने आप को पहले ठीक करूंगा, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करके फिर उसको चेंज करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा. दैट इज रियल ह्यूमन सर्विस. दिस इज नीड ऑफ द आवर. सो प्लीज, दिस इज माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, change the world by starting to change ourselves. Can we do that? Hare Krishna. We also have a very, very, very special thing today. Neha Mataji, who's such a sweet person. It's her very auspicious birthday today. So, like people say, they defy, they're like, I don't want to cut a cake, right? So we're like, okay, Mataji, whatever you want, we should do. Right? आपका दिन है माताजी, आप जो चाहेंगे हमारी विश भी उसके साथ अलाइन होगी. But we'll at least sing, but we'll at least pray to Krishna for lots and lots of blessings to her and the family by singing a loud Hare Krishna Maha Mantra together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram